हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर सोरस क्लासेस। और आज हम लोग करने वाले हैं आईएसएस मतलब इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस का पेपर 4 जो रिसेंट एग्जामिनेशन हो गया है उसी पेपर का सॉल्यूशन। अगर आपको हमारे तरफ से कोई क्लासेस की ज़रूरत है, डाउट क्लियरिंग सेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन, मॉक टेस्ट, स्टडी मटेरियल, एनी ऑफ दैट, प्लीज डोंट हेजिटेट, प्लीज कॉल और व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर. Dr. Saraswat himself reply to your query individually through WhatsApp. So let's start with question number 1B. Question number 1B में क्या बोला गया है? Define a saddle point of a game problem. ये problem game theory का एक problem है. Using the principle of dominance to find the optimal strategies of the two players with the following payoff matrix. So what is the matrix? Player A and 1 2 3 4 column. Sorry, player A 1 2 3 4 row and player 2 1 2 3 4 column. Okay, so the values is here given. So how can I find this saddle point? So saddle point, what is the definition saddle point? The saddle point is here, saddle point is a payoff matrix, is an element which is smallest in its row and largest in its column. It represents the optimal strategy for both players where neither player can unilaterally improve their outcome by changing the strategy. Okay, so this is the saddle point. So and next, using the principle of dominance, I can solve this problem. So the principle of dominance helps to simplifying the payoff matrix by removing dominator strategy, thereby making it easier to identify optimal strategy by both players. So given payoff matrix is this. So this will be the payoff matrix. And how can I solve this step by step reduction? The first we compare rows dominance among player A strategy. Dominance among player A strategy. Okay, so how can I solve? So row 1 versus row 3. So since all the elements in row 1 versus row 3, since all the elements row 1 are greater than or equal corresponding to the row 3. Okay, so row 1 dominates row 3, it will be dominates row 3. And row 2 versus row 3, since here also since all elements row 2 are greater than or equal to corresponding elements of row 3, so row 2 can dominate row 3. Okay, and row 4 versus row 3, not all elements row 4 are greater than or equal corresponding to the elements in row 3, so row 4 does not dominate row 3. Okay, so it does not dominate. Okay, ये dominate नहीं कर पाएगा. So therefore we can eliminate row 3 from consideration. So what is the matrix now? Player B, player A, 1 2 3 4, 1 2 3 4, and here is also 1 2 3 4. That means the result here 3 5 4 2. Sorry, here we can remove row 3. So the new matrix is this. So 3 1 3 5 4 2, 5 6 2 4, 3 3 5 2. So in second stage we compare columns dominance among player B strategy. Compare
column dominance player B strategy. So here we can check the column 2 versus column 4. So here column, all elements of column 2 are greater than column 4, so column 2 can dominate column 4. And then we can check column 2 versus column 1. Not all elements are column 2 are greater than or equal to column corresponding elements in column 1. So column 1 does not dominate column 1, column 2 does not dominate column 1, ये डोमिनेट नहीं कर पाएगा. ठीक है. सो यहाँ पर भी एक कलर चेंज कर देते हैं तुम्हारे लिए ही, ताकि कोई दिक्कत ना हो, समझने में आसानी लगे. सो एंड column 3 versus column 4, see all the elements column 3 are greater than or equals to corresponding elements in column 4. So column 3 dominates column 4, ये dominate कर पाएगा. So यहाँ पर न्यू मैट्रिक्स कौन सा हो जाएगा? Then we can find the new matrix. Player A, player B. प्लेयर ए में है 1 2 4, प्लेयर बी में है 1 2 3. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 5 4 5 6 2. यहाँ पर आ जाएगा 3 3 5. Okay, so identify the saddle point. The minimum values in each row. Row 1 is 3. रो 1 में क्या आएगा? वैल्यू आएगा 3. रो 2 में क्या आएगा? 2. रो 4 में आएगा 3. So maximize values in each column. कॉलम 1 में क्या वैल्यू आएगा? 5. कॉलम 2 में क्या आएगा? 6. कॉलम 3 में आएगा 5. So the saddle point is row 2 column 2 with the value of 6. रो 2 यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है. Row 2 and column 2 the value is 6. So which was the minimum in its row and the maximum in its column? So ऑप्टिमल स्ट्रेटजी क्या आएगा? प्लेयर ए कौन सा सिलेक्ट करेंगे? प्लेयर ए सिलेक्ट करेंगे. सो चूज रो 2. So choose row 2 or player B. So choose column 2. So this is the optimal strategy. For player A, use their second strategy, and player B to use their second strategy. So the value of the game theory, value of the game, the payoff is कितना है? पे ऑफ है 6. दिस इज द करेक्ट आंसर. ऐसे ही बहुत सारा वीडियो देखने के लिए और जानकारी के लिए
और ऐसे बहुत सारा मेथड जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और लेटेस्ट वीडियो अपडेट प्लीज़ क्लिक ऑन द बेल आइकॉन। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू चैम्प्स।